अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके आ चुके हैं। एक वो बंदी जिन्होंने बचपन से मार्शल आर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, कैसे स्टार्ट किया, क्यों किया, क्या रीजंस थे, वो सब आज हम जानेंगे। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन Maham Tai. Thank you so much. Thank you so much, Mom. First of all, कि आपने इतने busy schedule से you took a little time for us. Thank you so much for having me here. It's an honor. Thank you. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. So without any rambling, let's just get into that. So when did you start martial arts? So I started off when I was 1.5 and my entire family was in this, so it was kind of like running in the blood already. So I was 1.5, I started my journey, I got my black belt when I was 8 years old and now I'm 24 and I'm still in it, so I have this entire journey from 1.5 till 24 now. 8 साल की उम्र में you got your black belt. Yeah. So how do you feel about that? I feel that half of the people say this to me that 8 साल में तो बच्चा कुछ भी नहीं सीखता and everything, but then I feel that my journey was very exciting and very adventurous as well. और मेरा एक learning process जो था 1.5 से लेकर 8 साल तक, it was a long, good, tedious and very powerful journey that I had. और 8 साल में जब मैंने अपनी ब्लैक बेल्ट ली थी, आई वॉज रेडी फॉर इट, दैट्स वाई आई वेंट फॉर इट. अदरवाइज अगर मैं उस टाइम पे भी रेडी नहीं होती, आई वुडंट हैव ऑप्टेड फॉर लाइक गोइंग फॉर द ब्लैक बेल्ट, बट देन आई वॉज रेडी. आई गेव माई इंटायर टेस्ट, जो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है. आई गेव दैट, आई गॉट माई ब्लैक बेल्ट एंड आई फील दैट I'm really proud because I got my black belt and I was given the honor of being the youngest black belt in Pakistan. So what are the other achievements that you have? So I've played nationals, I've played internationals as well, and then when it comes to martial arts, I have the honor of being the youngest black belt. Then I have the honor of being the youngest martial artist, especially in girls, because girls is sport में बहुत कम आती हैं, and especially जो बहुत एजुकेशन की तरफ होती हैं गर्ल्स, लाइक दे वांट टू डू देयर मास्टर्स एंड दे वांट टू डू देयर बैचलर्स एज वेल, दे वोंट इवन ऑप्ट फॉर स्पोर्ट्स टुगेदर. वो उनके लिए हेक्टिक भी हो जाता है, बट देन देयर लाइक ओके अब हम मार्शल आर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, दैट्स समथिंग लाइक रियली रफ, और हमारा मुंह टूट जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा. बट देन मैं सही सलामत हूँ आपके सामने. सो आई फील दैट इट्स नॉट रियली, इट्स अ मिसकंसेप्शन दैट पीपल से कि मार्शल आर्ट्स जो है वो एक बहुत ही रफ एंड टफ गेम है एंड इट मेक्स यू लाइक रियली मैस्कुलिन or something, and I'm not masculine at all. So I would always say that women should come towards it, especially जो अब एक generation चल रहा है. I feel that self defense is like really important. Even if you're not learning it as a sport, just learn it for self defense so that you can at least protect yourselves. मैस्कुलिन ट्रेट से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लीड होता है. सो यूजुअली पीपल थिंक कि जब मार्शल आर्ट्स में लड़कियां चली जाती हैं, यही आपकी बात कि उनमें मैस्कुलिन क्वालिटीज़ आ सकती हैं, बट लुकिंग एट यू नहीं, ऐसा नहीं है. या आई रियली गेट दिस कॉमेंट फ्राम पीपल. यूजली मैं जिनको नहीं बताऊँ कि मैं मार्शल आर्ट्स करती हूँ, तो मुझे देख के वो कभी भी जज नहीं कर पाते कि मैं मार्शल आर्ट्स करती हूँ या कुछ भी है. सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई टीचर्स देव ऑलवेज बीन लाइक कि ओ मतलब व्हेन आई टेल देम कि मैं मार्शल आर्ट्स करती हूँ, तो दे जस्ट गो लाइक तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम मार्शल आर्ट्स करती हो, सो लाइक डेलिकेट एंड ऐसी, लाइक दैट्स बिकॉज दैट्स माई पर्सनैलिटी एंड दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ एंड दैट्स हाउ आई वॉन्ट टू बी. बट देन स्पोर्ट्स इज समथिंग डिफरेंट एंड आई फील दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ which has made me powerful internally, but I won't say that it has given me masculine qualities कि मेरी body बन गई है या अब मैं Hercules बन गई हूँ तो मैं टेबल उठा के फेंक सकती हूँ, और nothing like that. It's not superpowers. It's just that I have become more confident. I feel powerful inside when I'm walking outside or when I'm going anywhere. मुझे ये डर नहीं होता नॉर्मल लड़कियों की तरह कि ओ यार मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो मैं चीख मार रही होंगी या मैं पता नहीं क्या कर रही होंगी. I'm ready for it and I know कि okay, if there is a situation I will be able to handle it, या एटलीस्ट मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी या कुछ ना कुछ तो कर पाऊंगी. जो मैं नॉर्मल लड़कियां जो हैं वो डर जाती हैं. सो आई डोंट हैव दैट फियर इन मी. सो ऐसा कोई इंसिडेंट है अगर कोई हुआ जिसमें आपको अपना सेल्फ डिफेंस यूज़ करना पड़ा? बहुत इंसिडेंट्स हैं. That's gonna be like another segment, but yeah, there have been incidents when I feel जैसे एक पॉइंट पे snatching हुआ करती थी, but ये मैं recommend नहीं करूँगी कि कोई करे. I'm just saying this is when you become like a really professional and you know कि आप क्योंकि मेरी तो एक बहुत सालों की practice है, and then
मतलब मैं इन प्रैक्टिस हूँ, सो आई नो कि मैं भी तब वो चीज़ करूँगी जब मुझे पता है कि मेरे सामने अगर एक बंदा खड़ा है, मैं वो तमिल फिल्म की हीरो नहीं बन जाऊँगी कि 10-10 लोगों का घूम के मारना और 10-10 लोग आ रहे हैं तो मैं उनको उड़ा रही हूँ. ये रियल लाइफ में नहीं होता. दैट्स स्टूपिड. सो there was this incident जिसमें I was going towards my car and the snatcher came और वो मतलब he pointed his gun towards me. तो उधर he wanted my mobile और ये वाली चीज़ें. उस वक्त मैंने नया मोबाइल लिया था ना, होता है दूँ कि नहीं दूँ. बट हाँ, बट जान तो प्यारी थी. बट देन यू नो लाइक आई डिडंट पैनिक. आई जस्ट लुक्ड एवरीवेयर इन माई सराउंडिंग. उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए थोड़ा प्रिटेंड किया कि मैं दे रही हूँ, टेकिंग इट आउट फ्रॉम माई बैग और टाइम लगाना जस्ट टू सी माई सराउंडिंग. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट पीपल शुड डू कि एटलीस्ट जब आप चल के जा रहे होते हैं ना, तो हम लोग बहुत बेख्याल होकर चल के जा रहे होते हैं. कुछ लोग अपने मोबाइल में लगे हुए होंगे. लाइक उनको कोई मोबाइल में एक दफ़ा तो बंदा लग जाए तो उनको कोई परवाह नहीं होती कि बराबर दुनिया में क्या हो रहा है. कोई मर भी रहा होगा ना तो नहीं देखेंगे लोग. But I feel कि when you're walking on the road, you should like be aware of your surroundings and you should keep a watch कि अगर आपको कुछ suspicious लग रहा है ना, you should know before कि उसके okay, then you have time to think कि आपको क्या करना है. So this was the situation over there. I pretended, मैंने थोड़ा इधर उधर देखा. I saw कि okay ठीक है, ये अकेला है and there's no one with him. वरना usually ये होता है कि अब तो 2, 3, 4 लोग साथ आते हैं तो तब आप कुछ नहीं कर सकते. So he was alone and he pointed his gun towards me and I kind of feel that he was an amateur. उसको शायद नया वो आया था चोरी करने. हाँ, तो ही जस्ट पॉइंटेड हिज गन टू. पता नहीं वो असली थी नकली थी, बट मैंने उस वक्त कर दिया जो मतलब मुझे समझ आया था. सो आई न्यू, क्योंकि मैंने सेल्फ डिफेंस उस वक्त सीखा हुआ था. सो आई जस्ट लाइक मैंने उसकी गन जो है पहले अपनी तरफ से हटाई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी तो फायर होगा भी, तो वो हवा में होगा. And then we've learned self-defense. So like I did my technique. I took the gun from him and then just pointed it towards him, and then he had to run away. वरना मैं उसको बोलती अब तुम अपना मोबाइल दो और अपनी चीज़ें दो. कोई ऐसी टेक्निक है जो मे बी यहाँ पे बैठे बैठे आप कुछ सिखा सकती हैं ऑडियंस में, या हमें यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं? Okay, कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? Anyone who wants to do that? I'll just tell कि मतलब like if someone is pointing a gun towards you. So मेरे situation में the first thing what I would recommend if the person is alone, other gun के साथ वैसे don't take a risk because it's really dangerous. वो भी practice से ही आएगा. हाँ, वो practice से ही होता है. But अगर किसी ने आपको gun point किया, the first thing you should do is कि at least आप target अपने ऊपर से हटा दो. और सेफेस्ट ये होता है, कुछ लोग उस वक्त पैनिक करके राइट लेफ्ट कर देते हैं. राइट लेफ्ट में ये होता है कि वो किसी और को गोली लग सकती है, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग कि हम अपने आप को बचा के किसी और को मार दें. सो यू नीड टू लाइक आप ऊपर की तरफ कर दें कि एटलीस्ट आपकी तरफ से टारगेट हट जाए. और जो जिसने फिर सीखा हुआ होता है ना, मार्शल आर्ट्स या कराटे वगैरह सीखे हुए होते हैं, तो उनके एक बेनिफिट ये हो जाता है कि उनको चीज़ें पता होती हैं कि जैसे अगर मैंने हाथ ऊपर किया तो मे बी आई कुड लाइक हिट हिम इन द क्रॉच और लाइक जस्ट पंच हिम इन द नोज और डू समथिंग दैट आई नो, जिससे वो थोड़ा वीक पड़ेगा. क्योंकि बॉडी के कुछ सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जैसे नोज़ हो गया और लाइक द मेन पॉइंट और इवन योर सोलर प्लेक्सस जो होते हैं, दीज आर रियली वीक स्पॉट्स ऑफ द बॉडी जिस पे अगर आप मारें तो अगला बंदा जो है वो वीक पड़ता है, वो बेहोश भी हो सकता है. और मतलब देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू दैट. एंड देन यू कुड, कुछ लोग स्टूपिड होंगे जो बोलेंगे ठीक है हमने मार लिया अब हम चौड़े होके और मारें. नहीं, यू शुड रन अवे फ्रॉम देयर एंड डोंट स्टैंड देयर, जस्ट लीव. सो इसके कोई प्रोज एंड कॉन्स भी मार्शल आर्ट्स के? अगर बहुत प्रोज हैं तो मे बी कॉन्स भी हो सकता है. पर्सनली आई फील के कॉन्स एज सच तो नहीं है. मतलब बस यही है कि अगर जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड लाइक हैविंग अ प्रैक्टिस फाइट और समथिंग, तो आपको हल्की फुल्की इंजरीज हो जाती हैं विच आर नॉट दैट मैसिव, बट वो भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ. और वो एक आई फील वो एक हर स्पोर्ट में होता है कि आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो तो उसके अंदर कभी ना कभी तो आपको इंजरी हो जाती है. सो आई डोंट फील दैट्स एक्चुअली अ कॉन. But pros, yeah, they're like a gazillion pros. I could tell you stay fit, you get into a really nice disciplined routine, you become confident, you're more powerful, you have good strength and flexibility. So there are like a lot of pros, but I don't see any sort of cons in it. So martial arts के अलावा कोई और sports इसमें? Oh, I've always been very sporty since school, and I was in the throw ball team, then I was in the volley team, then I played beach volley as well, I played badminton, I did swimming, I did gymnastics, I did horse riding, I did weapons, I did boxing. Yeah, name anything and I've done it. So I was always into sports, and sports has it's kind of been a lifestyle for me. It's not like a game, it's a lifestyle for me now. So आपकी पूरी फैमिली
मार्शल आर्ट्स में हैं. योर डैड अशरफ ताई वो बहुत एक ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं मार्शल आर्ट्स के. सो हैव यू एवर यूज दैट अपने फेवर में? कभी किसी को डराना हो या एनीथिंग ऐसा कभी कुछ हुआ है? अच्छा, so yeah, he was like the first person who brought martial arts into Pakistan. एंड लोगों को कराटे के बारे में उन्हीं की वजह से ही अवेयरनेस हुई कि कराटे भी कोई चीज़ होती है. एंड पाकिस्तान में उसका एक ट्रेंड चलना स्टार्ट हुआ. सो रही बात डराने की, तो मैंने कभी पर्सनली मतलब यूज़ नहीं किया एज सच, बट आई फील कि मार्शल आर्ट्स कर कर के ना मेरी अपनी पर्सनालिटी ऐसी बन गई है कि लोग खुद ही मुझसे डर जाते हैं. मतलब आई फील दैट आई हैव अ वेरी यू नो लाइक द स्ट्रेट फेस पर्सनालिटी व्हेन मतलब एक फर्स्ट गो में कि मेरी शक्ल पे वो एक होता है मतलब लाइक वो गुस्से वाली लड़की होती है. हाँ, ये तो बात नहीं करेगी, ये बहुत ख़तरनाक सी गुस्से वाली लग रही है. हाँ, तो वो एक वैसे ही आ जाता है. और फिर अगर एक वो होता है ना जैसे यूनिवर्सिटी में आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अगर आप बस गलती से बता दें कि वो मतलब मार्शल आर्ट्स करती है तो लोग थोड़े हो जाते हैं लाइक ओके. तो मैंने वैसे एज सच यूज़ नहीं किया. हाँ, मार्शल आर्ट्स यूज़ किए लोगों को डराने के लिए. सो बचपन से मार्शल आर्ट्स कर रही हैं, तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी कि जब आपने कभी किसी को बताया इस बारे में, सो क्या लोग आपसे स्कूल में स्पेसिफिकली डर के दूर से लाइक नहीं करनी है इससे, या बहुत अच्छे से रहते थे अगर कुछ कर लें तो या भाई ये तो गिरा देगी हमें? स्कूल वॉज लाइक एन ऑल गर्ल्स फॉर मी, तो मेरा इतना वो नहीं मसला था. बट देन देयर वाज दिस गर्ल हु ऑलवेज यूज्ड टू, मतलब वो नहीं होते कुछ बच्चे जो अनोइंग से होते हैं जो बोलते हैं अच्छा तुम्हें मार्शल आर्ट्स आता है तो करके दिखाओ. एंड इट्स लाइक आई एम इग्नोरिंग यू बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट, इट्स डेंजरस. बट then it's like नहीं आप करके दिखाओ. and then at one point I just lost it, and then मैंने उसको उठा के फेंक दिया. And then she got hurt, and then I just went to the principal's office. फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी, फिर जाके देखा. हाँ, बट व्हेन इट कम्स टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी तो उधर ये लेवरेज मिल गया कि वो जो लड़के आके फजूल में आपको छेड़ते नहीं हैं, लाइक तंग करना या छेड़ना है लाइक और मे बी जस्ट कमिंग अराउंड एंड फ्लर्टिंग विद यू, that didn't happen. So I was safe from that. So bachelor's आपका complete है? Yeah. And you're doing job right now. So how do you manage everything? So I completed my bachelor's and I'm working and I'm doing my master's as well, and then I'm looking after my business and then my training as well. Then I'm a nutritionist too, so I'm doing a lot of things together. But I would actually give this credit to, you know, like having a very disciplined and organized lifestyle from the start. And this is one thing that I say, that martial arts actually makes you very disciplined. कि आपको अपना time manage करना आ जाता है. I feel if you want to do something, you take out the time yourself and you manage it accordingly. अब मेरा ये था कि जैसे I could have been someone जो ये कहती कि okay I'm studying now so I can't pursue my sports or I can't pursue my training and I can't, you know, like do martial arts anymore because I don't have time for it. But then I was someone जिसने sports, fitness, gym करना या ये जितनी भी चीज़ें हैं, I gave that a separate section of my life. That's like my life that I have. So I didn't compromise on my life that I liked, and I was doing the normal routine stuff that people do, that you're okay, I have to do my master's, I have to do my bachelor's, I have to do all of these things. So I took out the time, I managed myself. और मेरा मतलब बस दिन का ये होता है कि मैं सुबह निकलती हूँ and I'm doing all of these things, and then बस घर पहुँचती हूँ मैं around 9:30, 10, and then I'm like okay, go to sleep. So this is like मैं घर जा रही हूँ सिर्फ सोने. That's what I'm doing. But then Sundays I have family time, so. Nice. So you have your center as well, आप जहाँ ट्रेन करती हैं. So how is the experience? Like जो नए आते हैं उनको सिखाने में कितना टाइम लगता है? बेसिक जो एज स्टार्ट होती है दैट्स फ्रॉम लाइक 3 years. आप 3 years के बाद यू कैन कम इन एनी एज यू वांट, चाहे आप 20 में हो, चाहे आप 30s में हो, वेदर इन योर 40s और 50s, यू कैन स्टिल लर्न. नए लोग जो आते हैं, अब पहले के टाइम तो ये होता था कि पीपल, यू नो, लाइक दे वर स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड दे हैड दिस गुड नाइस इम्यून सिस्टम टू लर्न. एंड नाउ पीपल जो अब बच्चे आ रहे होते हैं, देर मोर लाइक, यू नो, लाइक
वो digital era वाले और बस video games and all of this. They're not much into physical sports. So I feel it's very difficult for like to make them understand the entire concept of why they're doing martial arts and sports. But yeah, it's a good journey overall. I mean, I get to know different people because when I'm training people, आधे से ज़्यादा लोग तो मुझसे बड़े ही होते हैं, and then there's some kids that I'm training, and then there are girls. So I always have a different experience with all the 3 segments that I have. So what do you think कि दूसरे स्पोर्ट्स इतने अप्रिशिएट किए जाते हैं या सपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान, कराटे को उतना मिलता है, उतना सपोर्ट? This is one complaint that I feel that every other sports person has, because हमारी कंट्री में I feel क्रिकेट को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है. क्रिकेट को बहुत एक डिफरेंट स्पेस दिया जाता है when it comes to sports. And martial arts is something जिसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, and especially when it comes to women, because I faced this myself. It was kind of like if I'm going for tournaments or if I'm getting selected, तो मेरा ये होता था कि like वैसे usually होता है कि players get sponsored, उनको government से support मिलती है. They like if they can't afford to go for a trip, whether they want to go international or participate in a tournament, they're sponsored, government उनको support करती है, and because they're talented and they like they should represent Pakistan. But then half of the people, they can't go and they can't display their talent on international platforms. It's because they can't afford it. And that's when एक अच्छा पाकिस्तान का जो emerging talent होता है ना, वो पीछे रह जाता है. And this is one complaint that I have कि okay ठीक है मैं चली गई, that's because I could finance it myself. But अगर मैं नहीं कर पाती तो शायद आज मैं यहाँ भी नहीं होती, मैं कहीं भी नहीं होती. I would have been just practicing at home like so many other girls and boys who are still practicing at home, and they are so talented, maybe more talented than I am. But then they don't have this platform, they don't have this opportunity to like come forward. And this is one thing that I feel that at least जो आपके शाइनिंग स्टार्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में हो या जिस भी चीज़ में हो, वेदर इट्स मार्शल आर्ट्स, वेदर इट्स फुटबॉल और एनी अदर स्पोर्ट अदर देन क्रिकेट, तो आप उनको गवर्नमेंट को हाईलाइट करना चाहिए, बिकॉज देयर समवन हु आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, एंड दैट्स लाइक अ बिग थिंग. सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आप रिसेंटली किसी टूर्नामेंट में आपने पार्ट किया था? कितना रिसेंट? इट्स नॉट दैट रिसेंट. इट्स It was like 2016 or 15 most probably, so it's not that recent. It's 22 now. So yeah, I played in a Thailand tournament, and it was Muay Thai. It was Muay Thai related. It's a game that they have जो उनका अपना native game है. So I participated in that, and we had our team, girls की team अलग है, and we had the boys team separate. So we played their game, we won, we got like different, I got 3 gold medals, and my other teammates, they got silvers and golds and bronze. So it was a good tournament that we had. It was a very good experience as well. We learned a lot from them, and the good part was that though being competitive, the people over there, they are so humble and sweet that they would like they gave us like these entire 2 months for training, and they made us learn their entire style that we went. So we came back with not just medals. I think the more important part was we came back with a new style, and we learned something that we didn't know about at all. So what is the best age to practice martial arts? I feel that you should start young, and you could like if you're starting young, वो एक अच्छी एज होती है when your body is really flexible as well, and it's really adaptable to different situations and stuff. So when you're starting off young and then you're like going into your teens or जिस time तक मैं हूँ अब, you become like a pro at this time, and you're like आपकी body उस चीज़ को adapt हो जाती है, so it's like you become really flexible. इस age में मतलब I wouldn't say कि you can't join, but इस age में थोड़ा difficulty हो जाता है कि आपके अंदर flexibility थोड़ी कम हो जाती है, stamina या energy जो होती है वो थोड़ी मतलब low रहती है. So when you're starting off young, I feel that you maintain it the entire time. So any message to the parents? How important is this sport? Well, I feel that parents should actually like bring their children, especially girls. Usually होता है कि parents जो हैं वो girls को वो कर रहे होते हैं कि नहीं लड़कियाँ ये वाला sport ना करें, but I feel in this generation it's like really important कि girls को आप आगे बढ़ाएं. And it's really important for them, not just as a sport but for self-defense, because we know how many harassment cases and all of these are going on right now. So I feel that it's a responsibility for parents to teach their daughters how to protect themselves and not needing anyone
कि वो किसी को बुला रही हो या किसी की हेल्प की ज़रूरत हो और वो बेबस हो या मतलब मजबूर हो. गर्ल्स आर नॉट majboor and bebas. Girls are powerful. They just need the motivation and they just need good guidance. That's it. So yeah, thank you so very much, Maham. Thank you so much. It was really fun. बहुत मज़ा आया आपका इंटरव्यू लिया and I hope you had fun as well. Yeah, I did. I enjoyed a lot. Enjoyed a lot. So with this note, guys, we are going to end this video right here. So if you have any message to give to the youngsters out there. I would just say that everyone just try to stay safe and take care of yourself. Try to protect yourselves and people around you who you love. And just don't stress out much. Enjoy life. Everyone has their own pace. Kabhi bhi kisi ko dekh ke you shouldn't be like, okay, you know, like I should excel as much as the other person does. You have your own pace. Just stay peaceful. Don't stress out and peace out. Okay, so with this note, we are going to end this video. Thank you so very much, Maham, once again. And I'm going to see you guys soon, inshallah ta'ala, in the next video. Now, until then, take yourself, stay healthy, stay positive, and yes, Allah Hafiz.